Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Class 9th we have already started chapter 2 fundamentals of operating system in the last lecture. In the last lecture we have discussed what we have discussed. We have discussed about the operating system, that what is operating system and what are its objective. That was just an introduction to operating system, right? Today we will continue with this chapter and our topic is functions of operating system. What? It's the third topic of your chapter. In the main heading is introduction, then objectives of operating system, and the third one is functions of operating system. Before going into the detail of functions of operating system, let's revise something what we have already discussed in the last lecture. What was that? The concept of operating system. What is actually corporate operating system? Operating system, how can we define it and what is it? You can see that all devices, printer, monitor, all the applications, hard drive, keyboard, mouse, I mean to say that all types of devices, either that are storage devices, other or uh, input-output devices, or any kind of software, all are attached with the operating system. What does it mean? This diagram explains us that all these things are nothing without operating system. If there is no operating system, there is no functions of all these devices, right? Basically, what is operating system? Operating system is a system software. Operating system is a system software. What does it do? It manages work of whole devices. Like this diagram explains that it controls the management and working of all input-output devices, memory devices, as well as applications, means software devices, right? So it is also called the manager of computer system. Then it also controls hardware resources. All kind of hardware resources are working in the supervision of operating system. You can say this कि operating system जो कहता है वो होता है. अगर operating system की इजाज़त नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते कंप्यूटर के अंदर. कंप्यूटर हो All devices of computer system are dependent on the decision or on the order of operating system. Without that, nothing can happen, right? Then it comes application programs. Application programs are those programs which are used by according to their need, which are used on according to their according to their need. Like if you want to type something or type letters, what do you install? You need Microsoft Word. If you want to do calculation and statistics works, what do you need? You need Microsoft Excel. If you want to play a video or song, what do you need? You need some kind of entertainment software. What is that? Like media player, VLC player, whatever. So these are called application programs which are used by a user, right? Operating system plays the role of interface between hardware resources and application programs. Hardware
और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान इंटरफेस का काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस का क्या मतलब है? इन दोनों को कंबाइन करता है। ठीक है, आप एप्लीकेशन प्रोग्राम में आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइपिंग करते हैं और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसे चेंज करके उसको कंप्यूटर की ज़ुबान में चेंज करके उसको सीपीयू के पास भेजता है। किसके लिए? प्रोसेसिंग के लिए। फिर सीपीयू जो आंसर देता है उसको डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे आपके लिए। सो इट इज it plays a role of operating system, a role of interface between hardware resources and application program. How can we define operating system? What is an operating system? Operating system acts as an intermediary or interface between a user of a computer and the computer hardware. राइट, वही बात है कि कंप्यूटर यूज़र जो काम करता है उसको हार्डवेयर तक पहुंचाता है, सीपीयू तक पहुंचाता है, और जो सीपीयू जवाब देता है उसे यूज़र तक पहुंचाता है। तो इट प्लेज अ रोल ऑफ इंटरफेस बिटवीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड between a computer user and a computer hardware. Now, what are its goals? Its goals are to execute user programs and make solving user problems easier, make the computer system convenient to use the computer hardware in an efficient manner. Now, move to the new topic, that is functions of operating system. अब आपको थोड़ा सा याद आ गया होगा कि क्या पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था। Now let's begin with the new topic, that is functions of operating system. There are 6 functions of operating systems given in your book. What are these? First is process management, memory management, input output management, file management, resource management, and user management. So one by one we'll explain all these, what are their workings. First one is process management. Now what's a process? पहले तो ये बात समझें कि process होता क्या है. A process is a program in execution. हम कहते हैं ना कि हमने एक चीज़ कंप्यूटर को दी है, अब इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही है. प्रोसेसिंग होने के क्या मतलब होता है? प्रोसेसिंग होने का मतलब है कि कंप्यूटर उसको चेक कर रहा है, उसको काम कर रहा है, उसको आपके आंसर के लिए, आपके जवाब के लिए तैयार कर रहा है. ठीक है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा है. आपने एक सीडी ढाली है या एक यूएसबी इंजेक्ट की है अपने लैपटॉप के अंदर, वो उसको पता चलता है कि मेरे साथ कोई डिवाइस अटैच की गई है, वो उसको प्रोसेस करता है, चेक करता है इस डिवाइस के अंदर कोई वायरस तो नहीं है, या इस डिवाइस के ड्राइवर मेरे पास हैं कि मैं इनको इसको चलाऊं. अगर ड्राइवर होते हैं तो वो इंस्टॉल करके उसे ओपन करके आपको ऑप्शन देता है, और अगर नहीं होते तो वो आपसे कहता है कि इसके ड्राइवर इंस्टॉल करें. लाइक आप प्रिंटर अटैच करते हो, प्रिंटर के ड्राइवर जब तक कंप्यूटर के अंदर नहीं होंगे वो आपको कभी प्रिंट देने की इजाज़त नहीं देगा. आप जैसे ही प्रिंटर अटैच करोगे वो चेक करेगा कि इसके ड्राइवर मेरे पास है, मैं इस डिवाइस को पहले जानता हूँ, मैंने कभी इसके साथ काम किया है. इफ नो, then it will ask you to install the drivers of printer. Otherwise, if it has the drivers of printers, then it start working. तो process क्या होता है? उस चीज के ऊपर काम करना. Now multiple processes execute simultaneously at a time. बहुत से काम हो रहे होते हैं कंप्यूटर के अंदर. आपने कभी इसका टास्क मैनेजर खोल के देखा हो तो उसके अंदर आपके पास आता है प्रोसेसेस का एक पोर्शन आता है, और उस प्रोसेसेस में आपका ये आता है कि आपने कितने प्रोसेसेस एट अ टाइम इसके ऊपर रन कर रहे हैं. तो उन सारे प्रोसेसेस को लेके चलना, हर एक को प्रॉपर टाइम देना, हर एक की आउटपुट लाना, ये कौन काम करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो या उनको मैनेज ना करे
अगर ऑपरेट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो और उसको मैनेज ना करे तो ये सब आपस में मिक्सअप हो जाएं और कंप्यूटर ने क्या काम करना है, फिर वो कोई काम ना करे। A process in execution needs various resources like input output devices, memory, etc. बहुत सी चीजें चाहिए होती हैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। बहुत से रिसोर्सेज कंप्यूटर के चाहिए होते हैं। उन सब रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। Operating system, which is abbreviated as OS, enables all processes to share and exchange information efficiently. अब सब वो जितने प्रोसेस हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डायग्राम टास्क मैनेजर की शो करती हूँ कि जितने भी वो आपके पास प्रोग्राम्स हैं वो सब आप देखें कि किस कदर एफिशिएंटली मूव कर रहे हैं। आप वो सब साथ चल रहे हैं लेकिन कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा अनटिल अनलेस उसके अंदर कोई वायरस ना हो जो उसकी प्रोसेसिंग को अफेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो ये था प्रोसेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज मेमोरी मैनेजमेंट। जितनी भी मेमोरी है, वो हार्ड डिस्क है, वो रैम है, आप कोई दूसरी मेमोरी इंजेक्ट करते हो उसके अंदर, वो सब मतलब यूएसबी ड्राइव है, पॉकेट ड्राइव है, वो सब उनको सबको मैनेज करना, उनकी चीज़ों को। ये कभी नहीं हुआ कि आपने जो सी के अंदर सेव किया है वो डी में चला गया, या डी में जो सेव किया है वो ई में चला गया, या ई वाला उठ के सी डी ड्राइव में चला गया, ये यूएसबी में चला गया। ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि ऑपरेटिंग सिस्टम का इसके ऊपर चेक है, जहां पे आपने सेव किया है चीज वहीं पे आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये सब मेमोरी की मैनेजमेंट कौन करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके पॉइंट्स क्या हैं? प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी स्पेस फॉर यूजर प्रोग्राम्स इन मेन मेमोरी। जो मेन मेमोरी क्या होती है? रैम। रैम किसे कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी, वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर पे जिस वक्त जो चल रहा है वो रैम पे है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों ने एक टेबल लगाया, जो डिशेस आपने खाने की टेबल के ऊपर रखी वो सब यूज करेंगे, जो उस सब उसको टेस्ट करेंगे, उसे खाएंगे। लेकिन जो नहीं है उनको ऑब्वियसली उन्हें तो नहीं पता, ठीक है। इसी तरह जो आप प्रोग्राम को ओपन कर रहे हैं वो रैम पे चला जाएगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे रैम पे डाल देगा। अब सीपीयू को पता है कि ये प्रोसेस रन कर रहे हैं, ये काम हो रहे हैं और मुझे इनको देखना है और इनका काम करना है। अगर वो रैम पे नहीं आएंगे ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा। और रैम के बारे में ये कहा जाता है कि रैम आपके कंप्यूटर की, आपके मोबाइल की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रैम ज़्यादा होगी, स्पेस ज़्यादा होगी, तो आपके जितने भी आपने 10 ब्राउज़र की विंडोज़ खोल ली हैं, आपने साथ सॉन्ग प्ले कर लिया है, आपने साथ इंटरनेट को जो है वो आपने कोई और काम शुरू कर दिया है, ये इसके बाद ये सब काम तब इजीली हो सकेंगे ना कि वो रैम के ऊपर जगह होगी। अगर 2 GB की रैम है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 का है, तो 2 GB की रैम तो विंडोज 10 ही ले लेगी, फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो फिर बाकी कहाँ चलेंगे? सिस्टम ने तो हैंग होना है। अगर 4 GB की रैम है ठीक है, फिर भी आपका सिस्टम काम करेगा। और अगर इससे ज़्यादा है तो ज़्यादा इजीली वो काम कर सकेगा, ठीक है। मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इन पोर्शंस फॉर ऑल वर्किंग डन बाय यूजर्स ऑन इट। एक साइड पे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, दूसरी साइड पे आपके माइक्रोसॉफ्ट के काम आ गए, फिर आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आ गई। जितने काम आप कर रहे हैं वो पोर्शंस बनते जाएंगे, लेकिन पोर्शंस उतने ही बनेंगे ना जितनी जगह हो, ठीक है। When program is closed, that memory space is free for use. जब वो काम, एक प्रोग्राम आपने क्लोज कर दिया, आपने इंटरनेट को क्लोज कर दिया, वो जगह खाली होगी। अब उस स्लॉट के ऊपर आपका कोई और काम आ सकता है, फ्री हो गई रैम वहाँ से। OS operating system automatically load user programs in available memory space and executes them. जब एक मेमोरी स्पेस फ्री हो गई है तो फिर आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो दूसरे प्रोग्राम को जो आपने खोला होगा
उसको उसकी जगह लोड कर देगा। ठीक है। लास्ट वन, थर्ड वन इज इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट से हमारी क्या मुराद है कि आपके तमाम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आर कंट्रोल्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी ऐसे नहीं हुआ कि आपकी जो इनपुट डिवाइस है माइक, उससे आवाज बाहर आना शुरू हो गई और जो अब स्पीकर आपकी आउटपुट डिवाइस है उससे आप बोलना आपने शुरू कर दिया हो। सब कुछ पता है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि मैंने किस डिवाइस से क्या काम लेना है। अगर वो मैनेज ना करे, सबको अपने काम पे छोड़ दे, तो फिर कंप्यूटर सिस्टम नहीं चल सकता। ठीक है। We have discussed three functions. What are these? Process management, memory management, and input output management. Three functions are left. So we will discuss it in those in next lecture. अभी आप क्या करें कि इन सब को अपने बुक से पढ़ें और जो आपको प्रॉब्लम है वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। Thank you for this lecture.